Then we'll talk after the show. He's joining. Welcome to all everyone on the Sattology show. Those of you who are Come watching in, us come in. live, Sattology means science or truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. So आज हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजिट था अमेरिका में इंडियन अमेरिकन्स उसको एनालाइज करेंगे सभी लोग, क्योंकि आपने बहुत सारा कमर्शियल जो यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर जो दूसरे चैनल्स हैं वहाँ पे सुना होगा, टीवी पे सुना होगा, but this analysis will be way different than what you heard before. And this is by the Indian Americans, and many of us were there in the different events across over there. Some of us were not there. Also, in today's show, we'll also discuss what's happening with Russia and other things जो रशिया में चल रहा है, और उसके वास्तविक रूप में we'll see what is going on there. और इसको treat this show as more educational, non-commercial, because our channel is not known for these topics, but we are making it because available because of audience request. और आप लोग कमेंट्स करिए और हम लोग को फीडबैक देते रहिए लाइव में, और हम सभी लोग आ जाते हैं शो पे. सो वेलकम टू एवरीवन ऑन द शो. नमस्ते. Namaste. Utsav ji will be joining. He's joining in a few minutes. ब्रीफली मैं बोलता हूँ, विभूति झा को सभी लोग जानते हैं, वेरी पॉपुलर फेस ऑन सोशल मीडिया नाउ, जयपुर डायलॉग्स USA, एंड दृष्टिकोण के जो फाउंडर हैं देश कपूर जी इज नोन फॉर हिज वेरी एक्यूरेट इनसाइट, एंड शरद मोहन जी अ फेमस राइटर, एंड इनका लेटेस्ट बुक भी आया है, उनको जरूर देखिएगा, लीडर सनातन लीडरशिप के ऊपर, एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शिव जी एंड कृष्ण भगवान. So we have very prominent, all these viewers are there. तो पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सबके लिए. I'm not as eloquent as Vibhuti Jha ji, but I'm going to start asking question. That's the easier way to do it. So विभूति जी, आप थे वहाँ पे रोनाल्ड रीगन सेंटर पे, और हमारे शो का टाइटल है क्या खोया क्या पाया, भारत ने क्या पाया, भारत ने क्या खोया. तो आई स्टार्ट विद यू कि ये विजिट को आप कैसे देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अमेरिका की स्टेट विजिट हुई है, पहली स्टेट विजिट. नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. आदित्य जी, आप हमें हमेशा फ्लोर कर देते हैं तारीफ करके, उसके बाद टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट. तो आपने एलोक्वेंट कह दिया. अब मैं एलोक्वेंट का डेफिनेशन तो अंग्रेजी में जानता हूँ नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ बोलना आता है तो बोल लेते हैं. बिहारी है ना, तो बोलते तो रहेंगे ही. तो ये क्या खोया क्या पाया जो है सिलसिला, भारत के प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पे मुझे जो अनुभूति हुई थी कि ये उन्होंने JFK मोमेंट का उन्होंने बहुत बढ़िया भारतीयों को आह्वान दिया. और JFK के दो मोमेंट जो हैं, जो उन्होंने JFK ने कहा था कि ask not what the country can do for you, what are you doing for the country, something I'm paraphrasing it. तो आज मोदी जी ने सारे भारतीयों को ये आह्वान दिया है. उन्होंने भारत को फ्रंट एंड सेंटर कर दिया है दुनिया की राजनीति में, दुनिया की कूटनीति में, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में. तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी सोचने वाली है हम सबों के लिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य हैं परमानेंट मेंबर, रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस एंड UK. आज उनकी क्या दयनीय हालत है पांचों की. ये पांचों जिनके पास सबसे बड़ा मुद्दा है वर्ल्ड पीस का, ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से अविश्वास में हैं. और कौन सा वो शख्स है और कौन सा वो इंसान है जो विश्व शांति की बात कर रहा है, वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिए कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, and he gave his very beautiful understanding on the Ukraine thing, that the peace is the only alternative. So what are the 5 Security Council members doing? They are fueling the fire by supplying weapons and weapons alone. And they think that they can beat Russia by threatening war and destabilizing and regime change, जो आपको आज की कहानी में भी पता चला होगा कि रशिया में हो क्या रहा है. Dangerous game play. उसमें आज शांति का जो बीड़ा उठाया हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया हुआ है. और लोगों को सबको पता है कि किस तरह से ये जो हरकत है, वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर पीस. यू नीड वॉर, धर्म युद्ध चाहिए, बट फालतू की लड़ाई जो है ना वो नहीं होनी चाहिए. तो जस्टिफिकेशन और अदरवाइज. दूसरी बात, जो JFK ने ये कहा था कि वी आर गोइंग टू मून नॉट बिकॉज इट इज इजी टू डू सो,
वी आर गोइंग टू मून बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डू सो. आज प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया कल को उन्होंने कि जैसे कि पेरिस अकॉर्ड की सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है सिर्फ इंडिया ने ही पूरे किए हैं. दुनिया भर अचंभित हो गया, किसी को पता भी नहीं था कि ये इंडिया ने अपना टर्म्स एंड कंडीशंस, अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है क्लाइमेट कंट्रोल. इसके कारण क्या हुआ कि सारे के सारे दुनिया वालों को हुआ कि ओ माय गॉड, दिस मैन हैज एक्चुअली डन इट. सो ओबामा का जो यस वी कैन वाला जो टर्म था, ये शिफ्ट हो गया मोदी की तरफ. यू मे टॉक, वी कैन, वी डू इट, वी डिड इट. सो देर इज अनदर एलिमेंट टू दैट कि वेस्टर्न नैरेटिव जो था, वेस्टर्न लीडरशिप जो था, जो दुनिया को डोमिनेट करता था हर तरह से, that has shifted from west to east because prime minister is filling up the vacuum left by leadership absence by the global five UNSC members. Today India is the leader of the world. Modi is the leader of the world. There are a couple of other factors I will chime in later on, but what is very important is two things. One is antiquities, returning the antiquities from America. ये मोदी जी ने आज रेगन सेंटर में भी कल कहा था कि सारी 100 से ज़्यादा एंटिक्विटीज वापस होंगी. Cultural element, very important. And one unheard of, unseen element, which I tweeted actually, was the American singer who sang the national anthem so beautifully. She went ahead on her own volition. She went to touch Prime Minister's feet. The touching the feet, which is in America, is known as a sign of suppression and oppression, was sign of respect. And जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पाँव छूना जो है is a वरदहस्त जो पेरेंट्स का पड़ता है बच्चों पे. It is directed towards I am there to cover your back. इंटरेस्टिंगली एनफ, कल जब मैं होटल से चेकआउट कर रहा था तो जो ब्लैक लड़की जो मुझे चेकआउट कर रही थी उसका नाम था इंडिया. तो मुझे देख करके उसने बड़े प्राउडली कहा कि माय नेम इज इंडिया. आई सेड वंडरफुल टू नो एंड आई शोड हर दिस वीडियो. शी वाज टोटली एस्टोनिश्ड to see that a singer of her own color was touching feet. And when I explained to her in this manner, she said, oh my God, we did not understand your culture. This is the lesson for all Indians कि हमें अपने कल्चरल एलिमेंट्स को लोगों को बताना है उनकी भाषा में ताकि वो समझ सकें. So touching feet is not the sign of subversion, oppression, surrender. It is not patriarchal. It is emotional. As the American soldier कहता नहीं कि I got your back. So that is the important part that we have to convey to the people. And that's what Prime Minister did so very well. The defense tie-ups और वो तो होती रहती हैं. We will talk about that more. But there are many people here with greater insights. But this is my takeaway, that he established India front and center in every element of India's all 99 yards of football game. Cultural, economic need, and the Gujarati knows business. So money counts, and he struck business deals without any equivocation. I'm ready for business. And this is a challenge to Indian business as well. आत्मनिर्भर होना पड़ेगा तो सहयोग और साथ साथ ही कर सकते हैं. Thank you very much for this opening. देश कपूर जी. तो see, I think like very well explained, like विभूति जी ने. पर एक बात जो है ना, ये पॉम्प एंड शो तो एक चीज़ है. तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो ये था कि this was not just a state visit, the second state visit of Modi, but also addressed to the Congress. So basically, the executive and the legislature both were welcoming Modi. So across party lines. ये बहुत important बात है जो I think बहुत लोग मिस कर गए. And that across the entire polity, so to say, ये मोदी जी को बुलाने का एक और वेलकम करने का एक मौका था उनके पास, और उन्होंने किया वो सब चीज़ें जो कर सकते थे. इनफैक्ट जो चीज़ें मतलब जिस तरह की डील्स वगैरह हुई जी के जो इंजन हैं एंड ऑल दोस क्वांटम partnership, these are not normal. And that is like what is kind of एक तरह से बहुत वो हमें खुशी भी देता है
कि finally like India has arrived. But on the other hand, it also kind of should make us also think कि how is it like this actually puts India even closer than many of the allies, which is not normal. So when we look at this at one on the one side, इसको एक साइड पे रख दें और दूसरी साइड पे देखें across media, चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे एनपीआर हो, चाहे वो ओबामा हो और बाकी जितने इनके जो लीडर्स बात कर रहे थे ऑन ट्विटर एटसेट्रा, सो दे वर डिंगिंग मोदी एंड वो कह रहे थे कि वो डेमोक्रेसी और हिंदू मेजॉरिटी एंड ऑल दोज थिंग्स. तो जब इन दोनों को आप देखो तो आपको क्या समझ में आएगा कि एक तरफ से तो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम मोदी जी को बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एंड द लाइक मीडिया उनको डिंग किया जा रहा है. तो क्या ये जो मैसेज था वो ये था कि वी लव एंड वी वांट टू वेलकम इंडिया बट वी डू नॉट लाइक मोदी. वी सो मुझे जो समझ में आया वो ये था, जो मेरे पास जो मैसेज आया वो ये था कि वी वांट इंडिया बट विदाउट मोदी. एंड व्हेन आई लुक एट दैट मैसेज और जब मैं ये देखता हूँ कि ओबामा ने क्या कहा उस समय अबाउट ऑल दोज थिंग्स के like there could be a breakup within India and all those things, like was it a dog whistle? क्या वो कुछ वो बता रहे थे किसी को, वो बताना चाहते थे? And this comes very closely at a time when Putin has been targeted, and not just targeted, वहाँ एक सिविल वॉर की सिचुएशन खड़ी की है. दिस इज जो रशिया में हुआ वो सिर्फ पुतिन के लिए एक मैसेज नहीं था, वो शी के लिए और मोदी के लिए भी एक मैसेज था. हम इंडियंस के लिए भी एक मैसेज है कि when they want, how they want, something can be done to rupture the entire civil fabric. और ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है इंडिया में, इंडिया के जो डिफ़ॉल्ट जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत वाइड स्प्रेड हैं, मच मोर वाइड स्प्रेड देन रशिया. सो मैं इसको ऐसे देखता हूँ इस विजिट को. और बाकी आगे उत्सव जी और शरद जी और आपने भी बात करनी है, आप जब करेंगे उसके बाद. शरद जी, फिर उसके बाद उत्सव जी प्लीज. तो मैं इसको एज एन इंडियन अमेरिकन आई टोटली इको विद देश कपूर जी's व्यू. मैं भी वैसे ही देख रहा था. आई विल नॉट बी ओवर एक्साइटेड विद द इवेंट. बहुत अच्छा हुआ, परफेक्ट हुआ. बट व्हाट आई थॉट वाज कि अमेरिका में एक तो गुण है कि अमेरिका नोज अपने उनको अपने आप को बेचना आता है. तो हेयर इज़ अ कंट्री जो एक मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है. हेयर इज़ अ कंट्री जो टू फ्रंट वॉर का डेंजर फेस कर रहा है, चाइना एंड रशिया. एंड इसकी मिलिट्री अब फाइटिंग कैपेबिलिटी क्या है इज क्वेश्चन, बिकॉज पोस्ट वियतनाम वॉर कोई भी विन का फ्रॉम मिलिट्री पर्सपेक्टिव मुझे तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं पता है. इतना डिसएडवांटेजियस पोजीशन होने के बावजूद अमेरिका ने मोदी को अपने टर्फ पे बुलाया फायदा लेने के लिए. और द वे इट इस तरह से इवेंट को उन्होंने रचा कि इन क्रिकेट पार्लर्स बोलते हैं कि यू सॉफन अप द बैट्समैन, जो एकदम रिजिड बैट्समैन है, जो हर बॉल को छोड़ रहा है, उसके बॉडी में मारना शुरू करो. तो मीडिया को यूज किया गया. प्रेसिडेंट ओबामा जो कि नोबेल प्राइज विनर है और जो एक रेस को रिप्रेजेंट करता है, उन उत्सव जी एवरीथिंग फाइन? ओके, दैट्स फाइन. हम थोड़ा डर गए. I had something going wrong with my screen. So, no. Sorry, I had something going wrong with my screen. My apologies. No problem. So मुझे लगता है कि मोदी जी को सॉफन करने के लिए ये जो 75 डेमोक्रेट के लोगों ने जिस तरह से साइन किया, ये इतना नॉर्मल इवेंट नहीं है. इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री ये नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज
कि धर्म वाले चेयर पे बैठ कर इतना ये ऑब्जेक्टिव है, अच्छा ये गलत है, ये सही है, ये पूरा स्वांग था ये। तो ओबामा का इतना डायरेक्ट होना आज तक के इतिहास में मुझे नहीं लगता है किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहे एक्स प्रेसिडेंट ने हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया एंड फॉलिंग अपार्ट जैसा वर्ड यूज करे। इधर इसको मैं दो तरह से देख सकता हूँ, राइट। ओबामा को विलन ना बनाते हुए, अगर ओबामा मोदी का दोस्त है और ओबामा के हाथों में कुछ नहीं हो रहा है तो मे बी ओबामा ने मोदी को डायरेक्टली बोल दिया, लेकिन $4 मिलियन एलिजिडली पैसे लेकर ओबामा इतना बड़ा ज्ञान कैसे दे सकता है, ये सब रिसर्च का विषय है। बट अभी करेगी नहीं, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो मुझे लगता है कि ये 50-50 रहा। मोदी जी नोइंगली केम हियर कि ये टर्फ उनका है, उनको बहुत मुश्किल से इन रास्तों से गुजरना है। ही परफॉर्म्ड वेल। मुझे लगता है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस जयशंकर को बगल में रख के करना चाहिए था, बिकॉज वाक्पटुता इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज वॉज इम्पॉर्टेंट। जब जब वो बंदी ने मोदी जी से वो प्रश्न पूछा कि डेमोक्रेसी के बारे में, उन्होंने शुरुआत तो अच्छा किया, लेकिन उनको ये बोलना चाहिए था कि वो जवाब दे सिर्फ भारतीय संविधान और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, और वहां पे जो क्वेश्चन आएगा वी विल आंसर देयर। बट स्टिल ही कुड हैव एडेड फ्यू थिंग्स जो कि अपने अपने फ्रेंडली अलाई को भी थोड़ा सा हिट करे। वो सब अभी हमको नहीं आता है, इवन दो हम 80 बिलियन सो कॉल्ड $80 बिलियन का डील दे रहे हैं, अमेरिका के रिसेशन से अमेरिका को पुल आउट कर रहे हैं, और चाइना को अमेरिका अकेले नहीं लड़ सकता है, पूरा यूरोप भी मिलकर नहीं लड़ सकता है, उनको इंडिया चाहिए। आपको सब कुछ इंडिया से चाहिए, फिर भी उसको मारेंगे और फिर भी रेजिम चेंज करेंगे। दीज आर द थिंग्स विच आई फेल्ट कि वाज वेरी वेल प्लान्ड, बहुत श्रूडली प्लान किया गया। और हम लोग 50 आई वुड से 70% आई विल गिव मार्क्स टू मोदी जी एंड हिज टीम, और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। बिकॉज राइट नरेटिव बनाना जब वर्ल्ड देख रही थी, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हाउस में वो उसको पेंट करना था, वो सेशन में पेंट करना था। व्हेन ही वाज आंसरिंग दैट लेडी, ही शुड हैव आस्क्ड, उनको बोलना चाहिए था थोड़ा और अच्छा था, एकदम सच बोल। मैंने फ्लुएंट तो हैं ही, वो हिंदी में ही बोल देते, लेकिन वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बंधन में बंध गए, जबकि दूसरे पार्टी जो आपको गेस्ट आपको बुलाई, आपकी होस्ट, दे वर नॉट। So this is what I have to say. So I see it's like a mixed, with a mixed performance. उत्सव जी। So देखिए, मैं I fully agree with Desh ji's assessment, and I partially agree with Sharad ji's assessment as well. Desh ji ने जो चीज बताया, I would 100% agree with it. This overall messaging was, we want India as a friend, we welcome India as a partner and an ally. We don't like Modi, we would rather be without him. This was the intention. This was the message that was conveyed. The only thing I would add further to that is that the message that India conveyed was that at this point of time, Modi is India. So live with it. So that is the thing that Indian Americans conveyed. That is the thing that people and the government of India also conveyed. So ये दो काउंटर नैरेटिव्स के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था when Modi ji was here. One win I would say that the Modi ji's narrative had was that there were massive protests planned against him, but both on all 3 days actually, but primarily on the 22nd when the White House event was happening, the protests were really fizzled. मतलब मुझे तो खैर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, मुझे पकड़ के खूब हैरास किया गया, बट वो तो चलता रहता है. But other than that, it was very muted. I would never have imagined कि जितना प्रिपरेशन खालिस्तानियों ने किया था, जितना प्रिपरेशन लोकल इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस ने किया था, मस्जिदों ने किया था, hardly 50 people from each side turned up, and I cannot believe कि it's just the weather. These guys are more motivated than just the weather. So there must have been a messaging that was done. There must have been a pressure from the administration as well कि भैया हमारी बेइज्जती मत करो, इनका मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग है. मोदी जी कैरीज अ लॉट ऑफ सपोर्ट, and you could see that, Aditya ji, you met me at the venue outside the White House. So me and Aditya ji actually caught up on the day on the White House event. So there was a massive show of strength, and a completely organic one. You could see that this was
overflow of organic emotions from the Indian American community of all backgrounds, literally all backgrounds. Now, I And will that's add here, Utsavji, I'll add here. While everybody was trying to rush to go to the Modi's event, Utsavji was on the street saying, he told me one line. He said, I have to take care of my responsibility here. I'm not interested to go to the event, but I'll take care of it here. So very selfless. Thank you, Utsavji. Thank you. Go ahead. Come, continue, please. Yeah, thank you. So because as a local volunteer, it was part of my responsibility was to make sure that the guests, 10,000 guests who came from all over America, Indian Americans, are well taken care of. So that is something that I carried away at a very tactical level. Now, in terms of the other messaging that Sharadji really pointed out, yeah, I agree that India and Indian administration should have behaved in a more stronger message. I'm pretty sure that could have been done at a private level. Sharadji, it could have been conveyed at a private level. I believe that It Modi has was the conveyed. gravitas, and his team, especially Jaishankar and Doval, who were part of his team, have the gravitas to convey that message at a private level. So, by the way, I also posted a video. It so happened that just when I was entering the Capitol Hill for the address, joint address of Prime Minister Modi, the Ishwar ki daya bole, jo bhi bole, he was entering at the same time. So I got a very close-up view of Yeah. Prime Minister and Jaishankar ji from right past me. So there were lots in the media who contacted me to get a footage of that. I did not share it, but But I want to interject here. When Jaishankar ji, I found that picture. He was waving. He looked back and waved. Was it to you? so it could have been. See, I am a Yeah, local DC resident, and Jaishankar ji was the ambassador for such a long time. correct, So there could have been embassy events or two where he could have met me, and there is a possibility that he remembered my face. correct. So that could have been possible. I mean, I sensed that. I sensed that Yes, when he yes. was coming in. You were giving the video, So and I he used to turned work around very and close to waved the back. Embassy of So, India, and they yeah, had really good events when Jaishankar ji was, pre-COVID, yeah. was the ambassador. So I never missed a good tandoori chicken dinner. I was a single guy, so yeah, he may know me by face. The guy who That's eats right. tandoori chicken at the embassy events. That's You know, right. one of the joint communication of the White House which came out, one line has been highlighted by the White House. I have not highlighted it. This is what is highlighted by the White House. Uh, Together, we'll build an even stronger, diverse US India partnership that will advance the aspirations of our people for a bright and prosperous future grounded in respect for human rights. Now, human rights from the point of view of Americans or human rights from the point of view of global? Or are Hindus included in these human rights? The important question. And shared principles of democracy, freedom, and the rule of law. Now, whose rule of law we are talking about? So we need to get deeper into this line highlighted by the White House also. Anyone can start with, Vibhuti Jha ji, Sharad ji, anyone can start. Desh So Kapoor. I I just think I wanted to think say you something. should start with that. You can't be always asking questions. We have the right to ask you the questions too. Exactly, exactly. Thank you, thank you. Okay, my take on this is very simple. Glad Vibhuti ji put me on the spot. Thank you. So, the human rights from the American point of view means only Anglo-Saxon human rights, or the human rights from the point of view of Anglo-Saxons, according to me, according to my book Gold, Glory, and God. That's what I wrote over there. And I think the human rights definition of India is more universal. Human rights of India should include or must include also Hindus, which is there, and also non-Abrahamic populations also, and also Christians and Muslims also. So I think the American definition of human rights, it's very, very partial, and Indian definition of human rights is more universal. When we say for Lagu Charitam Alpamedasam, for the small-minded people, is just the family and their people, and for the large magnanimous people, Vasudhaiva Kutumbakam, which is this dhara is governed by Vasus of the Devta, Vasu Devatas of the world. I'll add over there. This is what I can add over there. And I think the human rights definition needs to be more deliberated on, because that is more controversial definition from the American textbooks. I would say that America, आपने बिल्कुल सही कहा.
the Anglo-Saxon point of view of human rights and freedom of religion is something that India needs to reject. Not reject on account of that is bad. Okay, that's your definition of things, and you are welcome to it. But I have my own definition of it, and which you articulated it very well, Aditji. And this is what is the element that I was emphasizing in the initial stages, that the cultural influence of India is the big one. Now, geopolitics of it, pictures taken, what word was said, what word was not said, what should happen. My favorite phrase is, we must abandon the use of word should. It's the most dangerous word in English language. In terms of should, so many things should happen, but they don't. So let's look at the realistic part of it. I'm 100% sure that there has been a very open heart-to-heart conversation. And one of the messages that has been conveyed, that democracies can't be playing at countersection of each other. They can't contradict each other on the very values that we are proud of. So when America calls itself a country of rule of laws, and you and I and everybody knows how the rules are violated here day in and day out in the name of law and in the name of human rights. It is a question, just like United Nations has not yet been able to define terrorism, likewise, human rights also has to be defined. Whose human rights, right, are we talking about? We term the word phobia. If you have the word non-believers and kafir in your theology, then the freedom of religion and freedom of speech becomes meaningless. Are you respecting my freedom of religion? Are you respecting? I'm not calling you a kafir, a non-believer. So those two things also need to be dropped. And I think this is your and my responsibility to demand reciprocity from the world we live in or the countries we live in. Where is the reciprocity? How can you call me a non-believer? And why? We are all God's children. So we have to insist on that part of it very strongly. And I totally agree. We talked about it, Aditji and I talked about it on Jaipur Dialogue yesterday, is that yes, America would want, as a biggest, strongest nation in the world as of now, they will want to have a regime change because they would want to have a pliant, compliant, and subservient leader in India. Modi ji is not that man that they can turn him on and off because of their switches on and off. This is what is important for us to understand, that Modi ji is an incorruptible man. He cannot be a managed prime minister for America. And to that end, do they want a regime change? Would they want a Mamta or a Rahul to be there who will do their bidding and do as I say? Yes. That will be on. And that's for the Indians to understand, that when you go to vote, the man who stands for you and by you is Narendra Modi. There's no equivocation. There can't be any equivocation on that. And that is the message. I think America has got it. And that's why there is a begrudging respect and acceptance of the fact that, yes, India can have its own independent relationships with Russia, Iran, whatever it is. I have an objection. I think Jake Sullivan's statement was very powerful on that when he said, yeah, we will talk about human rights, but we also have our own violation. And for the first time, India also raised the issue of human rights violations and rights of minority abuses in America. Think about it from that point of view. So I think it was, in a way, yes, 70-30, 80-20 is a question of perspective. But what I want to say is that Modi ji is driving the narrative. Try as hard as America might to do a regime change. It is coming. In 2020, I have said this, that there will be violence resorted to by the toolkit operators to disrupt India elections in 2024. All the pointers are to that direction. Thank you. So so I'll touch on like different things, right? One is the statement by Obama, जो उन्होंने बोला. That shows, and if I take जो Biden ने जो welcome दिया और personal equity or personal capital उसमें लगाया, so I can see like a couple of things, that there might be some kind of divergence between like what Biden is trying to do and what Obama is trying to do. And like I'll just hold this thought for a moment on the side. But and in this, like I see it in the backdrop that for the first time,
the media and the rest of the the agencies are actually letting the Hunter Biden story out, and also let the details out, which is like a card that can be played against Biden. So I'll put this on side. Hunter, like Obama Biden divergence, and the Hunter Biden card that is now being like put out in public, which can be used anytime that they want to take care of and to make him uh, to make him more compliant, right? So that was one thing. The other thing that Obama's statement told me was, because it was so extremely unnatural a statement in diplomatic terms, and so over the top, because एक तरफ तो एक leader है who is the undisputed leader of India, who is winning elections and who is slated to be the next prime minister, like unless and until some really untoward thing happens. In that light, you have to be an absolute lunatic to put that person down if you want like association with that country. हर बंदा जानता है इंडिया में कि मोदी जी will be there for it if he wanted for next 2 terms also, if he wanted. For a leader who is so powerful in America to say the things that Obama said is nothing short of being lunatic. Yep. But he is not. So then what is happening? I feel that their level and sense of confidence in regime change is so high that they don't give a damn about Modi at all now. And this is very, very serious. Okay. This is very, very serious because they are doing it on the very argument and narrative of Hindu majority. And ये हिंदू मेजॉरिटी का जो कार्ड है ना, वो हम एनआरआईज के खिलाफ भी यूज होगा और हो रहा है. और अगर हम नहीं जागे, अगर हम नहीं समझे इस बात को, तो क्योंकि सी देखिए इसको बात को समझने की जरूरत है. एनआरआईज जो हैं, they have taken over almost everything. You go around like large cities, Atlanta, Houston, Dallas, you see every large new subdivisions of homes that is coming up is being almost 90% Indians. They have the wherewithal. They can bring the entire real estate down if they want. Do you understand? The power of the NRIs is very huge. वो ये उनको ये control करना, because the next generation of Indians will be even further ahead, and that would take over a lot of things, and that has such a strong direct connection with the political and the polity of India कि ये एक तरह का geopolitical nightmare है for America and for American establishment. So इसीलिए ये जो कार्ड है जो ओबामा ने खेला, that was not only against India, that was also against the NRIs here. That is what I want to share. So I totally agree with that. In fact, अगर आप पीछे देख रहे होंगे, ये बुक मैंने 3 साल पहले लिखा था, आई थिंक 2.5 साल पहले. तो इसमें मैंने ये नहीं लिख रहा हूँ कि इंडिया एंड अमेरिका विल एंड अप हैविंग अ वॉर. इट्स बेसिकली दो एलाई, दो फ्रेंड कैसे देयर विल बी a dispute on the way you define a democracy, I define a democracy, my understanding of human rights. So ये सब मैंने उस context में 2.5 साल पहले cover किया था कि in spite of everything being good, still हम लोग massive dispute में जा सकते हैं, which could go in any way. So I totally agree. The way I see Vibhuti ji is इंडिया और अमेरिका का जो करंट रिलेशनशिप है एंड फॉर नेक्स्ट 10 years, ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल ही रहेगा. इट कैन नेवर बी ऑन योर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, कॉमन फाइट फॉर ह्यूमैनिटी. ये सब माय अंडरस्टैंडिंग इज ये प्योरली ट्रांजैक्शनल है. उससे ज़्यादा ये रिलेशनशिप नहीं जा सकता है. मोदी जी हो या राहुल गांधी हो या एनीबडी हो, इंडिया इज नॉट फिटिंग इनटू दैट माइंडसेट. 75 congressmen
फ्रॉम वन सिंगल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, जो आपको गेस्ट के तरह बुला रही है, वो भी स्टेट गेस्ट की तरह, ये एहसान नहीं कर रही है आपके ऊपर बाय सेइंग कि इन्होंने खालिस्तानियों को नहीं करने दिया. दैट इज नॉट अ फेवर. यू इनवाइटेड मी to beat me in front of your domestic audience, or आप so the way I see is that हमें that does not mean कि हम relationship नहीं बनाना चाहिए. In fact, America and India should definitely AI America and India जो बाइडन ने बोला, we should definitely stick to that, but we should always be very clear. आप अपना सारा एग एक बास्केट में नहीं रख सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम विद चाइना, देयर हैज टू बी अ डिप्लोमेसी राउट. चाणक्य ने भी बोला है कि फॉरेन पॉलिसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल अलोंग विद द वॉर. और उन्होंने 6 प्रिंसिपल जो दिया है, मैंने आज ही फेसबुक में पोस्ट किया है, तो उसमें उन्होंने वेरी क्लियरली लिखा है. सो वी इंडिया कैन नॉट लेट गो चाइना. थोड़ा सा 20% वो रास्ता बना होना चाहिए. और हम लोग अभी रशिया का भी शायद इसके एंड में बात करेंगे. आदित्य जो आपने बताया था, तो विल टॉक मोर ऑन दैट. सो दैट्स ऑल आई हैव टू ऐड. उत्सव जी. मेरा ओपिनियन, I think it's resonant with both Deshji and Sharadji. I think there is clear messaging gap here, and the administration is pushing hard on that. Obama पे मैं थोड़ा कुछ ये कहना चाहूँगा कि I think what Obama said was something that the people behind the scenes would have wanted Biden to say. And Biden probably did say that, but Obama said it for the rest of the world. तो उनको उनका टाइमिंग, उनका लैंग्वेज और उनका टोन, all three was extremely engineered, because Obama usually, as Deshi pointed out, he usually is not a flippant speaker. If one good quality he had during entire term was he was a great speaker. So it was a deliberate message, and that deliberate message should be very very bothersome. India के लिए बहुत bothering message है वो. What happened, I just wanted to also touch upon what happened in Russia. बच गए कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि गोली कान के बगल से निकल गई. तो there are lots of things that were in the play. Day before yesterday and yesterday, I was literally glued to the news, all the channels, not mainstream media news, but many other news appropriation efforts. And I was really concerned at what was happening in Russia, but goli kaan ke bagal se nikal gayi in the short term. But that sends a very powerful message. The message that, as JG pointed out, is that don't underestimate America. Just because the American economy is tottering, just because America has significantly lost power in the last 5 to 10 years, they have a lot of aces up their sleeves, and it's still their game in many places in the world where you do not expect it to be. So इसमें all the panelists talk about Russia also. मेरा इसमें एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करूंगा, उस पर भी आप सब लोग डिस्कशन हम लोग करना चाहिए कि ये जो ओबामा ने did Obama try to sabotage Biden's state visit of Modi, or was Biden was playing compliant, being a good host while Obama played a bad cop? मेरे को ऐसा लगता तो नहीं है, because Biden and Obama are very tightly linked. What is your view on this? It is on a humor level, people know that this is Obama 3.0 running here. So, let's not mince words on that. I totally agree with the whole process, is that Obama was absolutely sad in his pronouncements that he made in CNN. He lost me forever. He lost me forever. Because, couple of things which are very clear, that he was the man who had made the statement that he wanted to change America fundamentally, and we are seeing that America is changing fundamentally. So he succeeded, right? This is not the America I came to. This is not the America I came to in 1991. Second, I just earlier mentioned, ये लोगों को compliant leadership चाहिए. That's why they team up with all kinds of dictators and military rulers, because then they control the narrative, the mechanism, and running the show. India is not that compliant country. It was in the UPA regime. You know what they did to you.
selling land to Waqf board and doing things totally anti-Hindu. So I do not know for once that which Hindu votes for Congress party knowing what we know now. It bothers me. It baffles me that you can have disagreements, but you cannot be suicidal in your intent. After knowing what they did to you as Hindus, it is a shameful thing. Number three is the fact that somewhere along the line, America plays a double game. So while Biden, what Modi ji described him as सुलझे हुए politician, with a deep experience, you also saw Obama sitting in Washington, D.C. The joke about President Obama is, as lovable and likable as he is, he's not talking about killings in Chicago and the human rights in Chicago, his own place where he wants to build his library. But he bought a beautiful big house sitting in DC, and that is a complaint against him too. What are you doing in DC and why aren't you in Chicago? No former president stays in Washington, DC, but he is trying to do that. Compared and contrast to the statesmanship of Modi is remarkably different. And to that end, I think it is critical for India and Indians to remember that part. Yes, Deshji is right. You and I are under attack here. And it's our failure again, as I said to you, John F. Kennedy's statement, why aren't we Indians taking advantage of the Pew Research and the Carnegie Foundation research, which says clearly that 90% of the Muslims responded that we are free to practice our faith in India, right, or anywhere else. Why don't we take the Carnegie Foundation research and make it public that there is no evidence of caste-based discrimination in America? Why aren't we taking care of that? Why aren't we pushing that agenda and narrative around the world through our channel or otherwise? Why a bogus Equality Lab report has gained currency? Why is it all happening in Democrat-run states and municipalities? What are we Indians doing to stop that narrative in people we vote? Silicon Valley is one such example. So it is a challenge for us. There are a lot of questions have come about, and we need to address that aggressively, wisely, and strategically. And that's what the point which I'm trying to say here is that, yes, US will want Modi out because he is not a pliant, compliant, or a submissive man. The man has integrity. And yes, you are right that, somewhere along the line, ever since Biden declared his second term candidacy, there is a problem. There is an internal dissension not to allow him to run for 2024. And that's why they are talking about Gavin Newsom and others to probably come out. And that's why Robert Kennedy is rising in his numbers, because Biden's age is against him. Thank you. So I think your question कि बाइडन और ओबामा के बीच में कुछ वो गुड कॉप बैड कॉप है या क्या है, I think like I said earlier कि उसके अगेंस्ट बाइडन के खिलाफ एक कार्ड भी है, वो हंटर बाइडन का, जो अब उन्होंने खोल दिया है, तो that they can use and they will use like whenever they want. And I've been like watching Vivek Ramaswamy, and I think the presidential candidate from the Republican Party, and I think I agree with his analysis कि जो managerial class है, quote unquote managerial class that he says is running, has been running Biden for a long time. And so I think like America in many ways is actually going towards a very authoritarian rule. But ये अथॉरिटेरियन रूल जो है, जो इसका एक वो ड्रीम जो है इनका, वो ड्रीम और वो स्वैगर जो है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि दे डू नॉट रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन लाइक व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे शुड डू. बिकॉज थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, जब सोवियत और यूएस के बीच में इतना बड़ा गैप था, तब भी कभी वो इतना बड़ा गलती नहीं करते या वो ऐसा एग्रेशन नहीं करते जो रशिया के खिलाफ हुआ है. अगर जैसे उत्सव जी बोल रहे थे, वो रशिया के बारे में बोल रहे थे ना, अगर हम इसको ध्यान से देखें, उसने Putin ने, like actually Putin may have preempted all this, like he may have
understood that this is happening, because Jan may already, like, he had removed वो जो उसका लीडर था, सोरोवनिकी क्या उसका नाम है, एंड जेरासिमोव को ले आया था वो पहले से, एंड ही वाज like slowly taking him out. Now Jan 11th को वो हुआ, Jan 26 को like US ने वैगनर पे sanctions कर दी थी. That was an ideal way to actually buy them out, because sanctions लगा दो और पीछे से backdoor एक डील कर लो. एक तो ये था, और दूसरी तरफ से लाइक ये था कि यू नो दिस गाय Prigozhin, sorry. Prigozhin जो है, like, he had a very strong relationship with the MOD and the GRU and all those folks. So he was a very strong person. Now, और ये बेवकूफ़ भी है नहीं, ये he's a very established businessman. He has done extremely well in his life. So अगर हम ये देखें तो वो 25,000 लोगों को लेकर he went against Moscow. तो या तो ये प्यूटिन ने स्टेज किया था या अमेरिका ने स्टेज किया था, किसी ने तो उसको बाय आउट किया था, बिकॉज ये उसका खुद की बेवकूफ़ी तो हो नहीं सकती, तो उसको ये गुट्टी पिलाई होगी कि वहाँ पर आपको वो सब वेलकम करेंगे और आपके साथ रहेंगे, साथ देंगे सारे GRU और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले, आप अटैक करोगे और आप निकल भी जाओगे आराम से, और पुतिन को हम वो ख़त्म कर देंगे वहाँ पर जाके। ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होना भी नहीं था। नाउ लुक एट प्यूटिन जो है, उसके दिमाग में एक बात तो बहुत क्लियर होगी कि दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल फाइट फॉर हिम, दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल वॉर फॉर हिम नाउ, एंड एक बार और भी क्लियर होगी कि नाउ ही विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ like purges within his own rank and file, MOD के अंदर, GRU के अंदर, उनकी military के अंदर. What that means is he's becoming weaker. One, his entire establishment, infrastructure, and the organization is becoming weaker. On the other hand, he knows this is an existential fight, not only for Russia but for him as well. Now, what does that mean? That means कि उसके पास अगर existential fight उसके हाथ में है, तो वो उसको एग्जिस्टेंशियल फाइट की तरह ही लेगा अब आगे, एंड अगर कन्वेंशनल वॉर में वो नहीं जीत सकता तो वो नॉन कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएगा, एंड ही हैज ऑलरेडी सेड दैट इज पॉसिबल. इनफैक्ट उन्होंने लाइक अभी लाइक मिसाइल्स दिए हैं लाइक यूक्रेन को, तो जो उसका शोइगू जो उसका वो है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो वो मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, he had said that it may be time to actually enlarge the war theater beyond Ukraine. He has just said this on June 11th or something like that, like very recently, just before this. उसके बाद उन्होंने ये किया है. That means one, somewhere Putin had already understood कि ये हो रहा है. क्या हो रहा है ये शायद उसको पता नहीं था, और कितना एक्सटेंड हो रहा है ये भी उसको पता नहीं था, बट अब उसको ये भी समझ में आ गया कि कितने एक्सटेंड तक हो रहा है, ये भी समझ में आ गया कि कौन इसके पीछे है. नाउ दिस इज अ वेरी 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 सीरियस सिचुएशन, very serious situation where he has very limited options in his hands. And this is also a message to Modi, also a message to India, and also a message to Xi Jinping, that this is what can be done to you as well. And that is why how the geopolitics changes in the next few days. And I hope Modi ji and Jaishankar ji understand कि जो यहाँ हुआ था वो एक स्टेज मैनेज शो था, वो उसमें सब कुछ सच भी नहीं था और सब कुछ झूठ भी नहीं था, तो उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आगे जाके. एंड सो दैट इज़ व्हाई आई थिंक like we are in a very serious situation, and the only thing that I can chalk up like Obama's statement, Obama's theatrics and the media onslaught is to the level of confidence and swagger that they can take on everybody and beat the shit out of everyone. That's the only thing. मेरे पास और कोई ऑप्शन, कोई आर्गुमेंट है नहीं मेरे पास. मैं बहुत सोचा इसके बारे में, पर आई कांट फाइंड एनी अदर आर्गुमेंट. ओके, सो ओबामा पे मैं भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ आदित्य जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो.
आपका ही चैनल मैंने है। मैंने फेसबुक पे लिखा है। आई थिंक लॉट ऑफ ऑडियंस क्रिकेट तो जानते ही होंगे और सचिन तेंदुलकर को भी जानते होंगे, द गॉड ऑफ क्रिकेट, वट एवर डिफरेंसेस हो, बट ही वॉज रियली अ गुड प्लेयर। रिमेंबर एक अंपायर हुआ करता था स्टीव बकना, लंबा सा, काइंड ऑफ ओबामा तरह का ही उसका कद काठी था, और वो बेचारा हमेशा हमारे इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर जी को आउट देता था, सही या गलत। So this was a Steve Buckner moment for me when Obama said that. Now, how do I see this? Well, मुझे नहीं लगता है और ये हो भी सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि ओबामा 3.0 खेल रहा है। मुझे लगता है कि जो सेकंड टर्म ऑफ, जब जैसे ही बाइडन ने अनाउंस किया कि वो सेकंड टर्म के लिए इंटरेस्टेड है, ओबामा का जो कैलकुलेशन था टू हैव कैलिफोर्निया गवर्नर एंड मे बी मिशेल ओबामा एज एज अ रनिंग मेट, वो टीम फॉर्मेशन का शायद वो उसके सबकॉन्शियसली उसको धक्का लगा, एंड ही इज नाउ प्रॉब्ली थिंकिंग कि बाइडन शायद ओवर इंडिपेंडेंट हो गया है. That is definitely one reason, and that's why he ganged up with the 75 congressmen only from one party, which is the Democrats, and उन्होंने ऐसा किया. दूसरा ये है कि and how do I why do I think like that? Well, if you remember in that CNN interview, he also mentioned very boastingly that he was a boss of the Joe Biden. Now एक एक्टिव प्रेसिडेंट को कोई ये नहीं बोलता है कि हम आपके बॉस थे. ये जो लिंगो है, ये जो वर्ड है, जैसे वो बोला, दिस वेरी क्लियरली शोज कि उसका माइंडसेट क्या है. वो इतना इतना नाइव बच्चा नहीं है ओबामा, राइट? जिस जिस बंदे को नोबेल प्राइज लेने में शर्म नहीं आया, जिसने मैक्सिमम मुस्लिम्स को मारा है इन 5 डिफरेंट कंट्रीज, सीरिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, यूजिंग ड्रोन, एंड विकिपीडिया जो कि लेफ्ट के द्वारा रन किया हुआ एक पोर्टल है, वहां पे ऑलमोस्ट 2000, इफ यू ऐड 400 600 300 ऐसे करके 6 कंट्रीज का ओबामा ने ड्रोन से जब अटैक किया था, तो सिविलियंस का डेथ का वो नंबर्स है, विच इजिली एड्स टू 2000 प्लस. Now, who is the butcher of Muslims? Is it somebody artificially created and pardoned, or rather given a clean sheet by the Indian Supreme Court, Mr. Modi or Mr. Obama? किसके हाथों में मुसलमानों सिविलियंस का खून है, और वो आज हमें बोल रहा है मुस्लिम इंडिया. तो लोगों को ये सब थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, को रिलेट करना चाहिए. ओबामा इज डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद बाइडेन अनाउंसिंग फॉर सेकंड टेन्योर, और हो सकता है कि वो उसको सबोटाज कर रहा हो. सो अदरवाइज देयर इज नो रीजन एक प्रेसिडेंट इतना डायरेक्ट हो सकता है. Even though I am an Indian American, I will not allow any American leader to say कि India will fall apart, because India is not a country by geography. India is एक विचार है, और हम उस आइडेंटिटी को कैरी करते हैं प्राउडली इन अमेरिका, बीइंग एन इंडियन अमेरिकन. तो अगर हमारे आइडेंटिटी को कोई तोड़े और वो फिर भी नोबेल प्राइज लेके हमारे साथ बैठ के एक रिस्पेक्टेबल बिकॉज ऑफ हिज रेस एक बड़ा सा लीडर बने, so it's high time we should bring courage, because race is not a problem. See that great lady जिसने मोदी को टच किया उनके पाँव को, वो भी तो एक रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेम रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो व्हाट आई थिंक इज, विभूति जी, जैसे कि वो बालूच महिला है जो मोदी जी को राखी बांधती है, वो अफगानिस्तानी महिला है जो मोदी जी को रीच आउट करती हैं, वो अफगानिस्तानी सिख जो लास्ट सिख वहां से गुरु ग्रंथ साहिब हमारे लेकर आए. इन लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए हु शुड बी वोकल इन यूनाइटेड नेशन एंड एवरीवेयर टू से कि इंडिया माइनॉरिटी को कैसे ट्रीट करती है. इट विल नेवर कम फ्रॉम सो कॉल्ड गवर्नमेंट और या सो कॉल्ड हिंदू नेम्स. इस तरह के लोगों को यूज करना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ 4 or 5 जो बोले कि कैसे मोदी जी हैज डन फॉर बालूच, फॉर अफगानिस्तान, फॉर द लास्ट सिख इन अफगानिस्तान. ये हमको बोलने नहीं आ रहा है. वी आर नॉट एबल टू से दैट. दैट्स व्हाट आई हैव टू से. Thanks. One more thing, according to Obama, is not connected to the African American community also very well. No, he's not very well connected. He doesn't represent them. He may think he represents them, but he doesn't represent them. Utsav ji, please continue. Please, sorry. नहीं, आई थिंक सभी ने सब कुछ कह दिया. आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन फॉर मी. आई सॉ फ्रॉम समबडी नेम्ड उपनिषद्स अबाउट मणिपुर, कि जिसमें हाँ ये प्रश्न था, तो आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस दैट क्वेश्चन फर्स्ट.
So, Upanishad ji, I think the violence in Manipur is really unfortunate. But as you know, इंडिया में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. इससे बहुत बड़े स्केल में पहले बहुत बार हो चुका है. And it is also sometimes intended to bring out certain results right before Modi ji's trip to US. I did speak to a lot of members in the Meitei community on 22nd of June. उनका एक बड़ा डेलीगेशन वहाँ आया था, तो I actually personally spoke to them. So in the conversation that I had with the Meiteis, which primarily वो Hindu community को belong करते हैं, Vaishnav community को, and they have been huge victims of the violence in Manipur. उनसे बात करके मुझे ये पता चला, they said that Amit Shah ji is actually camping there he went there, he was camping there, and they were very appreciative of some of the efforts that the government made to protect the people and reduce the violence. So that was the feedback I got from the Meiteis. It is unfortunate that people died. There is no doubt about it. Any death is unfortunate, but look at it in the larger perspective of India. And please, मतलब आप सोचिए कि किसी एक इशू को लेके आप एक civilizational effort और civilizational narrative को we cannot let it go down the drain. So आप please इस पे सोचिए थोड़ा. कमिंग बैक टू रशिया में मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, और देश कपूर जी ने उस पर ऑलरेडी टच किया है. बड़ा आश्चर्य हुआ किस तरह रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं वहाँ पर रशिया में, और जो ये पूरा जो एपिसोड है उसको कितना ज़्यादा ब्लो आउट किया गया अमेरिकन मीडिया के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा. लेकिन और मेरे को आश्चर्य ये हुआ विभूति जी, और क्योंकि आप फॉलो बहुत करते हैं सब, और शरद जी, हम सभी लोग यहाँ फॉलो करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ को, तो मेरे को आश्चर्य सबसे ज़्यादा ये हुआ कि भारतीय मीडिया ने पूरा वो जो एजेंसी व्यू पॉइंट को ही दिखाया हर जगह. इनफैक्ट एक काफ़ी पॉपुलर चैनल में रशियन आदमी समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर भी लोग बोल रहे थे एक पर्टिकुलर एजेंडा पे. जो होस्ट था, वहाँ का होस्ट था, चैनल तो बड़ा पॉपुलर है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब हम लोग जो है अपना जो इंडियन रिपोर्टर्स हैं, वो जो रशिया का निवासी है उसके ऊपर भी बोल रहे हैं हमको रशिया के बारे में ज्यादा मालूम है. मतलब सबके सब इमरान खान बन चुके थे वहां पे. ये काफी दिनों से चल रहा है एक्चुअली. कुछ व्यूज में अगर आपका 1 मिनट का समय लो इस बारे में. Please go ahead. So Aditya ji, this is something I was watching from the beginning of the war between NATO and Russia in Ukraine. ये NATO और रशिया की लड़ाई जो यूक्रेन में हो रही है, इसमें from the day one I noticed that the government of India and the foreign ministry of India has a certain position and has a certain line based on its geostrategic objectives. But the mainstream media in India literally follows the line of the CNN and the MSNBC, जो उनका जो position है across the board. In मेरे opinion में ये इसलिए है because a lot of the feeds and a lot of the narratives that many of these journalists are not the best in terms of doing their own research and forming their own opinion. तो ये सारा feed और narrative जो है western media से उठा के वो इंडिया में चलाते हैं, and this is no exception. But I also wanted to add something about Desh ji's point that there could be a possibility that Putin preempted this using Prigozhin as a bait for the NATO narrative, and so that ये बाद में जो होना था उसको अभी करके, and they have moved Prigozhin out into Belarus, जहाँ से they may be able to open a new front on the Kiev side of the battle space. So that's all I wanted to say. और वो सारे सोल्जर्स को रशियन आर्मी एब्जॉर्ब भी कर रही है, ये लोग भूल गए हैं. सारे सोल्जर्स एब्जॉर्ब कर रही है, 2/3 उसमें से एब्जॉर्ब कर जाएंगे वो लोग. कर जाएंगे. यस विभूति जी प्लीज. नहीं, आई हैव रशिया के बारे में तो मैं आज कुछ नहीं कहना चाहूंगा बिकॉज न्यूज उभर रही हैं और जो कहते हैं कि अभी लेट्स गेट सम फैक्ट्स मोर. बट माय अपील टू यू टू व्यूअर्स हियर वुड बी टू कीप टू थिंग्स इन माइंड. Western media, Western nations have a wonderful strategy. They know how to create the narrative and how to build the institutional framework. That's the reason why Indian media follows the Western media. कि वो जो कहते हैं वही सच कहते हैं. वो कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हो गया तो बाइबल के गॉस्पेल से भी ज्यादा सच हो गया. Today we know there are lies. So India and Hindus are an unfinished business of colonial era. This is something which
everybody needs to understand. So somebody quoted, and I'm glad to see that quote by one of the viewers when he read, said that Modi ji said, I have done what I had to do. It's for you to do it now. And we have to fight our own battles. And to that end, unless and until we learn, we understand, and don't follow लकीर के फकीर न बन करके फॉलो कुछ तो अपना दिमाग इस्तेमाल करिए. My question is very important, and all of you are very right, that how dare an Indian American Congress lady, Pramila Jayapal, be a leader in taking a signature for trying to teach India and Prime Minister Modi lesson in human rights. I'm saying that all Indians must question her, call her out on that. This is what is important for every one of us to know. How was it that the caste thing happened in Silicon Valley, where so many millionaire Indians are there? How did it happen there? This is important for us. So आज की तारीख में भी हमने अगर अपनी आंखें ना खोली और उसके हिसाब से चर्चा नहीं की, डिमांडिंग रेसिप्रोसिटी नहीं की, तो फिर हम उसी तरह से सफर करते रहेंगे. And that's the moment of reckoning for us as of now. President Obama gave a call. It's for us to understand whether he was issuing a warning or a threat. I do not know. Only that big man knows about it. But it's a warning sign for us. अगर आज भी अगर हम knowing what we know now, if we don't become alert and act, then who are we going to blame? That's all I want to say. Thank you very much. देशी आप म्यूट पे हैं साहब. Yeah, please go ahead. या सॉरी. तो क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार जरा दोबारा बताएंगे. Russia. रशिया के ऊपर था. रशिया के ऊपर था कि अभी रशिया का तो स्टोरी अभी तो आउट हो गया कि वो इंसरेक्शन आया, चला भी गया. हाँ, तो एक्चुअली यू नो आई थिंक मैंने तो पहले ही काफ़ी बात कर ली है इसके बारे में. तो लाइक मेरे हिसाब से तो ये एक तरह का एक जियो पोलिटिकल वाटरशेड है. लाइक मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ, एक जियो पोलिटिकल वाटरशेड इवेंट है. और जैसे वो फर्डिनैंड का असैसिनेशन था वर्ल्ड वॉर 1 के लिए, आई ऑलमोस्ट सी इट लाइक दैट, बिकॉज आई डोंट लाइक, मेरे को नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन है अब प्यूटिन के पास. और एक स्कॉट रिटर है, एक यू नो वो एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर. He has written and he has discussed in one of the YouTube interviews के Prigozhin जो था, he was actually turned over by MI6 and by CIA. So I think that like that is very plausible. That makes a lot of sense. And if that is what the truth is, and इसने पहले से ही Putin knew all these things, and like he took action that he had to take. Now I think like it'll be a very different Russian like response, and also a Chinese response. और जैसे मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि ये जो यूक्रेन वॉर है, ये तो सिर्फ एक बहाना है. जो रियल प्राइज है वो यूक्रेन नहीं है, वो एक्चुअली रशिया को कंट्रोल में करने के लिए है फॉर द आर्कटिक सर्कल. Arctic Circle is what is going to be the future a battleground for all the major powers, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा मिनरल्स का और ऑयल एंड गैस का एक reservoir है. That is one thing, and second is like it is like going to be the best sea route for like outside of Atlantic, and like getting rid of all the choke points that are there in the Indian Pacific region. So that is the main prize, and almost 70% of it is owned by Russia. So Russia अगर हाथ में नहीं आता इनके, तो आगे का जो गेम है वो तो वैसे ही पलट जाएगा. तो like why do you think China is actually pursuing Russia? उसका क्या वो है like उसके साथ दोस्ती? यही है कि they want a piece in that cake, like in that pie. And like one of the first ships that went in winters was from the Russian port over in Siberia all the way to China.
just to showcase कि ये possible है to do it 12 months a year, there like around the year. So this ये बैक डाउन नहीं करेंगे. यूक्रेन तो एक तरह का वो है, एक प्रॉक्सी है, और उसका वही हशर होगा जो अफगानिस्तान का हुआ था. लाइक दे आर बेसिकली लाइक कैनन फॉडर. उन्होंने ख़त्म करना है, उनको कोई मतलब ही नहीं है उससे. दे विल जस्ट कीप इट long as they can fight the Russians and keep creating the justification to fight the Russians. And they made a big miscalculation thinking that Putin is like Saddam Hussein and Russia is like Iraq. वहाँ तो शक था कि WMDs हैं या नहीं है. यहाँ कोई शक नहीं है. यहाँ कोई शक नहीं है. और वहाँ शक था कि वो पता नहीं अगर है वो यूज़ करेगा नहीं करेगा. पुतिन ने तो वो कह दिया कि मैं यूज़ करूँगा. तो इट इज़ लाइक सुसाइडल है ये एक तरह का. और ये मैं इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया. जितनी बार भी मैं इसको सोचने या गेम करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास एक ही फाइनल आंसर आता है कि दे रियली 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 थिंक that they have a swagger and they are so confident that like nobody can beat them out. देशी में एक लाइन ऐड करूंगा इधर. मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 अमेरिकन मेनलैंड में होगा, यूरोप में नहीं होगा. ऐसा मुझे लगता है कि अगर हुआ तो मेनलैंड यहाँ पे इंक्लूड होगा यहाँ पे. मेरा ये कहना था कि यूरोप में जो कुछ होगा वो तो वहाँ like it'll be a war on the streets, because ultimately the new migrants and the original population will not be able to survive with each other. तो या तो पूरा टेक ओवर होगा, और टेक ओवर होने से पहले एक स्ट्रीट पे एक ब्लड बाथ होगा. वो तो like that is a given, right? I see no other option for them. As far as like US is concerned, अगर ये implode नहीं किया खुद, क्योंकि see the thing is like one of the main issues with like Modi is of the whole de-dollarization thing, the UPI and all that. UPI is a far bigger threat to US than any other thing is, if it keeps on proliferating everywhere. अगर वो हर जगह उसको बेच देते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं, it's one of the biggest threat to the US dominance, because like US का जो debt है, that is so high. And the only reason why it is not impacted by it is because it can just print more money and like keep taking that debt. अगर यही कोई और कंट्री होती है, वो शायद मर गई होती अब तक, बिकॉज उसको यूएस डॉलर खरीदने पड़ते हैं. जिस दिन यूएस डॉलर विल नॉट बी द मेन करेंसी, उस दिन यूएस विल एक्चुअली द होल इकोनॉमी विल implode and the inflation will be so high, thousands of percent. I don't know like what it will be like if they actually had to pay this debt. The reason why they are doing all this, and the people have been treated far badly, जो like Libya में और जो like बाकी जगह हुआ, for much less that they were trying to do. मतलब against dollar, they were far less threats to dollar, and they were the way they were taken out was so horrific. So like मोदी जो है, like this was वो होता है ना कि मारने से पहले like किसी को वो करते हैं, वो सजाते हैं, वो वाला सीन है ये. और वो हमें ये समझना पड़ेगा. मतलब like all the pomp and show, fantastic, मैं तालियां बजा दूंगा, but the point is that doesn't do anything, because इससे ज़्यादा pomp and show बहुत लोगों को मिला है और उनको बाद में बर्बाद कर दिया गया है. I would just chime in with the last sentence, or from me in this show today, is that you are right. कि वो बकरे को मारने के पहले, बलि देने के पहले उसको सजाते हैं, हलाल करने के पहले. But in this particular case, I think Modi and Jaishankar and the team know the story, that India is being treated like an unfinished business, and this current team is standing between the Western hegemony and a true democracy, rule of law. And that's what is important for the rest of the world to understand, that West has been called out. The West has no locus standi, sanctity. People, as very rightly said by Deshji, and we have been talking about that issue for a very long time, that somewhere along the line we have become such an obese
We have become such an obese economy with $33 million, $33 trillion trade deficit and paying billions in interest payment that people say that I have been told that, hey, in God we trust, as it says in our currency note, but in America we don't. And that's what is America needs to worry about more than anything else. We are a fat, obese country. And you are right, Desji, that if this was the scenario of you and I, nobody will give us even a penny to us. But because we are able to issue fiat currency, we are surviving. And yes, if dollar gets upended because of its own US ending up checkmating itself, इतनी जगह पे हम खेल खेल रहे हैं यूएस कि चेस के गेम के हिसाब से वी विल एंड अप पॉसिबली चेकमेटिंग आवरसेल्व्स। बहुत ज़्यादा पसर गए हैं, अब उसको जो कंसोलिडेट करना है ठीक से, एंड दैट इज बेटर फॉर यूएस टू वेक अप टू दैट एंड। थैंक यू। Sharad ji, Okay, so very यू आर quickly, म्यूट आदित्य जी। nobody's mute. I think आपका Vibhuti ji, screen- we can't see your image. आपका कैमरा ऑफ हो गया है. Okay, so very quickly, what I would say is मैं इसको दो तरह से देखता हूँ. एक तो जो म्यूट वैगनर इश्यू हैं है. शरद जी, आप म्यूट हैं, Can you hear me? कांट हियर। No, I can hear you. I can hear you, Sharad ji. They can hear me, Can't hear you. Vibhuti ji. Vibhuti ji, they can hear me. आपका कैमरा ऑफ हो गया है. कांट हियर यू। Okay. Your camera. your, Let me finish. हाँ. आदित्य जी, आपने म्यूट कर दिया क्या सबों को? नहीं नहीं आई कांट हियर यू इधर। nobody is mute. Everybody can hear you. आपका विभूति जी, योर कैमरा एंड वो सिस्टम थोड़ा सा रीबूट होगा शायद. ओके, लेट मी फिनिश देन. तो ये जो वैगनर इशू है, ये अभी बहुत ही ये हैपनिंग इवेंट है, तो मैं अभी कंक्लूसिव कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि विभूति जी आप शायद सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आप जहाँ से आते हैं और शायद मैं भी जहाँ से आता हूँ, वहाँ पर 80s में इस तरह की आर्मीज काफ़ी थी, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स की, लाइक लाल सेना, रणवीर सेना, यादव सेना, दलित सेना, एंड लॉट ऑफ उसका रिपरकशन हुआ था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे. इसमें एक पॉजिटिव मुझे इंडिया और एनी डेमोक्रेटिक बिग डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट एनी बट बिग डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यह दिखता है कि हमारी जो आर्मी है वो वॉलंटरी आर्मी. यहाँ लोग स्वेच्छा से भारत माता या अमेरिका के लिए मोस्टली जाते हैं, अनलाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हमारे यहाँ जो इस तरह की सो कॉल्ड विभूति जी, योर फोन इज इकोइंग, आपको रिबूट करना पड़ेगा. तो हमारे यहाँ ये प्रॉबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत यूएस एंड अमेरिका में लोग एक डिफरेंट फीलिंग से आर्मी में जाते हैं, वो मिलिशिया नहीं बन सकती है. रशिया ने काफ़ी फ़ायदा उठाया था जब इन्होंने ऐसे ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स को बनाया था, ओलिगार्क या जो भी उसको बोलते हैं मिलिशिया, और ये मोमेंटरली बैकफायर कर गया थोड़े से समय के लिए. अगेन ये वेस्टर्न या ईस्टर्न जिसका भी क्रिएशन है, इट डिडंट गो वेल फॉर अ कंट्री ऑफ रशिया साइज, जो कभी सुपर पावर हुआ करता था, सेकंड सुपर पावर तो था ही, और विद अमाउंट ऑफ न्यूक्स इट हैज़, स्टिल अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री. डेंजरस भी है कि इस तरह से अगर वहाँ पे आर्मी अगर डिफरेंट इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस लाएगी तो. Thankfully, it has been resolved. Yes, we sent to Belarus, but 25,000 numbers was a pretty big number, and it was dangerous. मुझे लगता है कि this will make Putin more hardened. Maybe he will go for a decisive war. Maybe England, I'm worried about Rishi Sunak. Maybe यूरोप विल बी द कंट्री जो कि शायद न्यूक फेस करना पड़ जाए. अगर प्यूटिन का रेपुटेशन हैज बीन डेफिनेटली क्वेश्चन विद दिस. अगर वो एक घंटे के लिए भी इवेंट होता है, इतने बड़े आर्मी के इतने बड़े कंट्री के हेड को 25,000 सेना को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा, विच इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर द पीपल इन वेस्ट. उनको लगता है कि ये एक उन्होंने उसे खरीदा है. ये बेसिकली इट्स अ मोर ब्रिंगिंग समबडी हु इज मोर हार्ड लाइनर एंड हु विल बी मोर मेकिंग थिंग्स बैड फॉर अस और द वर्ल्ड. तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूँ. बस इतना ही मुझे ऐड करना है अभी. उत्सव जी. Utkarsh ji. Since we are on Russia, I will just
end with Russia. That I do agree कि ये this is still in play, but I do believe that there was at some point when Prigozhin willingly or unwillingly played into the hands of NATO, uh, was probably given certain amount of money for it. There are also rumors that $6 billion का exchange हुआ था. Again, those are just rumors. There is no way to confirm these things. But at the end of it all, it's very clear that Prigozhin is still a tactical leader. He's a tactical commander. He has a very little understanding of geopolitics. He has even further little understanding of strategic games, and that's where I think Putin came on top. He beat it. One thing that was made very clear is that the NATO alliance is extremely aggressive at this point of time in history, extremely aggressive, and I completely agree with Deshji on that. That doesn't sound good for all sides, because इतना ज़्यादा aggression at some point it always almost looks like पेंटागन से ज़्यादा aggressive कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस है. So so that's the carry away message from it. And I think for now Putin will turn the tile up, because since the biggest challenger to him, which was Prigozhin, was far more aggressive, and his biggest complaint was that Russia was not fully deploying itself and not fully Yeah. applying its entire military might to destroy NATO. The only choice that Putin is now left with, and he will deploy that choice, is that he will remove Prigozhin from a position of influence, which he already has done, and try to make up some of the lacunas that Prigozhin has been complaining about, which would be to dial up further aggressive action. And in the future, I am not going to be surprised if NATO assets in NATO countries get targeted in some ways. पहले वो लो लेवल ऑफ एस्केलेशन में रहेगा, हो सकता है कोवर्ट लेवल में टारगेट करे. वो ऑलरेडी बुल्गारिया में 2-3 बड़े बड़े एम्यूनिशन डंप्स उन्होंने उड़ा दिए हैं. Nobody knows who did it, but they all went up in flames last week. So that might escalate into more real power. And Prime Minister Modi of India has to be very, very careful. Anything can happen. I really agree with the Deshji and Sharadji in terms of the fact that these are dire times, and the only times in the last 200 years that I can compare it with is in the beginning of the First World War, where things were happening very fast, things were happening out of control, and every side played the hardest card it could play, and it did not end well for the world. That was a Yeah. pre-nuclear era. This is post-nuclear world, so True. not good news. जॉइंट I have a 3-year-old daughter. Hope for the best. जॉइंट कम्युनिकेशन से दो थिंग हम लोगों ने बहुत सारे चैनल से मिस किया है. वन इज द स्टेटमेंट जिसको मैंने शेयर किया है स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं लोग भी. वो है द जॉइंट स्टेटमेंट में है creating secure trusted telecommunication supply chains enabling global digital inclusion. तो इसमें सोशल मीडिया इंक्लूजन ऑफ अमेरिका को भी वैलिडिटी मिलेगा इंडिया में, विच इज नोन फॉर चेंजिंग रिजीम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसमें बहुत सारा डिटेल्स है इस स्टेटमेंट में. इंडियन कंपनीज इन द यूएस रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम. सो इट इज अ थ्रेट ऑल्सो, इट इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. और दूसरा है कि भारत के अंदर 3 पोर्ट्स में यूएस के नेवी शिप में वापस रिफ्यूलिंग होगी. सो आई डू नॉट नो हाउ फार पीपल हैव टच अपॉन दिस. ये जो गुडी गुडी न्यूज सब बाकी सारा गुडी गुडी न्यूज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टेलीकम्युनिकेशंस और कम्युनिकेशन शेयरिंग और यूएस का पोर्ट शेयरिंग, उस पे मैं अपना व्यू पॉइंट रख दूं, उसके बाद सब लोग ऐड करते हैं इधर. मेरा व्यू पॉइंट है कि दोनों ही थ्रेट्स हैं, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे. क्योंकि यहाँ पे एक तो अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीज को फ्रीली भारत में रन करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और दूसरा है कि भारतीय पोर्ट्स being used by US Navy ship में एक सिक्योरिटी थ्रेट भारत के लिए ज्यादा बढ़ जाता है in case of an attack. Please continue, Vibhuti ji, and then everybody else. I would say something very simple, that as you very rightly said, everything is an opportunity. It also becomes a threat. And it is very important to read between the lines as to what is going on. Will America end up undermining India one way or the other? And I kind of agree that, US media entering India is not good for India, because we are very, submissive people. We are very vulnerable people. We have the cultural, enslavement out here, in which, we submit ourselves to all things Western. To that end, it won't be good.
it won't be good at all. I would put it this way. The other part was earlier you talked about this the NATO thing. NATO, in my opinion, is entirely what do you call a white man's club, war club. This is what is important for the rest of the world to understand. There is no war club membership institution anywhere in the world except in Europe to protect and defend themselves from enemies around. Think about it. Do we need that? And that's where I focus on the word reciprocity. If China were a tiny little smart, they would probably have teamed up with India to create a Pacific Treaty Organization, on the similar lines to NATO. There should be something like a South American treaty organized, SATO. But NATO is the only one. Again, the two world wars that happened, that is the European gift to the world. Two world wars where this is the only initiative of peace that world had to witness. There were European territorial issues that were made into a world war. This again, NATO and Russia is again the same European issue, and India has steered clear away from that. So I just juxtapose both the thoughts, and I think we have to read between the lines very clearly to know what exactly the message is, how to convert opportunity and threat, how to understand that. Thank you. मैं एक बात ऐड कर दूं, यहाँ पे कोई भी आरएसएस का मेंबर नहीं है. Nobody. So please don't make that comment, okay? Whoever you are, the great American novel. Whoever you are. Oh, no. I think what the questioner is saying is that it's not about us. It's about the RSS in India. But future mein, none of us are connected. We are not actually. Yeah. We are critics of RSS in some times or the other. Yeah, exactly. Right. So in terms of all the things जो वहाँ आ रहे हैं इंडिया में, like I think the telecom, media, and the entire internet का जो access है, if u.s.a, which is part of this, and the American establishment is involved with any of these things, then it is bad news. And I think like we need to understand, u.s.a was started as a successor to the subversion that CIA used to do long back. That's its origin. के एक अच्छा बहुत सुंदर सा एक उनको एक आगे veneer दिया जाए, and that like nice proxy that was created was u.s.a basically. So u.s.a का जहाँ नाम आता है, I become very wary. मुझे थोड़ा घबराहट होती है because that is what they do, right? So हमें थोड़ा like वहाँ एक ख्याल रखना पड़ेगा. And all these are very fundamental infrastructure, right? India has become a digital economy. India has come out with the whole UPI and all those things. Now people are not carrying their wallets. They are not carrying cash. They are actually carrying their phones. And they are doing everything based on that. Any subversion of India, आज अगर India को subvert करना हो, तो then the most potent way is to bring the entire digital infrastructure down. आज अगर इंटरनेट बंद हो जाता है पूरे इंडिया में, people would not have money to buy the next food, irrespective of how much money they have. So it's a very serious thing. So ये डिजिटल जो चीज़ें हो रही हैं, these are very very good for India, but there is a grain of salt that we like need to take all this with, and that is that के जो basic fundamental infrastructure है, that has to be indigenous, and that has to be very very strong, that it cannot be subverted by other people, and that is very very tough if either China or US or anybody else is owning the very fundamental part of it, which is telecom, the internet itself, and the 5G and all those things. So वो एक सोचने वाली बात है आगे के लिए.
No, our main social media is Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata. That's the best social media we have got. Sharaji, please continue. You add, please. Okay, we have time, right? थोड़ा Okay, सा we will continue because लोगों ठीक को है. बहुत अच्छा भी लग रहा है सुनने में. Okay, okay. विभूति जी मुस्कुरा रहे हैं. अच्छा, सो इसको देखिए, दो तीन तरह से दो दो तीन तरह से देखा जा सकता है. एक तो है कि आप हमेशा ना मत बोलिए, ये डील मेकिंग टाइम है. पहला कि अगर अमेरिका को कुछ बेस चाहिए, तो हम लोग उसको अंडमान पे जो न्यू बेस बन रहा है उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसेज भी चाहिए, मिलिट्री हार्डवेयर भी चाहिए. हम लोग एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट करके वो बेस अमेरिका को अगर देते हैं, तो हम उनको ये बोले कि हमको तुम इनिशियली जो क्या उसको बोलते हैं, एक आइलैंड है जो ब्रिटिश ने अमेरिका को दे दिया था, ब्रिटिश इंडिया ने, डिएगो गार्शिया. डियोगो गार्शिया. डियोगो गार्शिया में तुम अगर हमको पूरी राइट नहीं देते हो, लेकिन हिस्टोरिकली वो हमारा है इसलिए कि वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था और वो तुमको फ्री में दे के चला गया, तो हमको उसमें पार्टनरशिप मॉडल में हमको जाने दो. गिव मी अ लीज. मेरा भी 2-3 प्लेन वहां उतरेगा इन अ टाइम ऑफ वॉर. अगर हमें अपना राफेल को बचाना है अगर मैसिव बॉम्बिंग से, तो हम कुछ वहां पे पार्क करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान ने ईरान में किया था 71 के समय में. तो ये एक डील मेकिंग हमको आना पड़ेगा, राइट. आप अंडमान हम देंगे और हमको गार्शिया चाहिए, राइट. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. आप पहले लीज लेके घुसते हैं, जैसे उसके बाद फिर आप अपना वॉइस को स्ट्रांग करते हैं कि क्यों आपका था वो. ब्रिटिश इंडिया ने दिया था. ब्रिटिश इंडिया का कोई राइट नहीं है बिना इंडिया से पूछे वो किसी को भी कुछ दे दे संपत्ति. तो ये एक पार्ट हो गया. दूसरा हो गया कि जो जो यहाँ पे रिजीम चेंज के जो टूल किट है या थॉट प्रोसेस है, इवन डेमोक्रेट पार्टी में है. देखिए, आपको लगेगा कि कांग्रेस आएगी अगर इंडियन सेटअप में, तो आपको फायदा होगा. तो कांग्रेस के डीएनए में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उनके और हमारे लोकप्रिय चाचा जी थे, उनके डीएनए में हमेशा नॉन अलाइंड रहा है. वो कभी भी अमेरिका के साथ कांग्रेस नहीं जुड़ सकती है. रिजीम चेंज के समय में वो जुड़ जाएगी, लेकिन उनके डीएनए में, मोदी के डीएनए में और या बीजेपी के डीएनए में इतना एंटी अमेरिका नहीं है जितना कि नेहरू और कांग्रेस के रिजीम में है. तो अगर रिजीम चेंज से उनको लगता है कि फायदा होगा, तो दे आर बैडली मिस्टेकन. ये उनका सीआईए और इनके जो डीप स्टेट हैं, इनका टोटल मिसकैलकुलेशन होगा, जैसे अफगानिस्तान में गुफ अप किए थे. तो यू डू योर रिसर्च प्रॉपरली. ओके, योर स्टिल बेस्ट बेट इज मोदी. एंड इंडियन पर्सपेक्टिव में ये बोलना पड़ेगा कि भाई आप डील मेकिंग कीजिए, इमोशन को अलग रखिए. आपका सारा रिलेशनशिप चाहे वो रशिया ही क्यों ना हो, प्योरली ट्रांजैक्शनल है. आप बिल्कुल अकेले हैं इस रेस में, बिकॉज आप जो है विश्व गुरु बन रहे हैं और सनातन का जो आप झंडा लेके चल रहे हैं, वहां पर आप यू आर ऑल अलोन. और आपको खुद अपना स्पेस बनाना पड़ेगा. तो आप टोटली पूरे चाइना को भी नहीं छोड़ सकते हैं, अमेरिका को तो आप डेफिनेटली नहीं छोड़ सकते हैं. और रशिया जो है आपका आर्मामेंट सप्लायर है, आप उसको जितना हो सकता है आप मदद कीजिए. तो योर पॉलिसी शुड बी लाइक दिस एंड इट हैज टू बी लिटिल बिट ऑफ वोकल. और जो मेजॉरिटेरियन हिंदूज हैं जिनको बहुत मार पड़ चुका है बिकॉज ऑफ देम बीइंग मेजॉरिटी, द वेरी डेफिनेशन ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट. इस पे एक बहस यूनाइटेड नेशन में हो कि भाई मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल बैलेट से बना हुआ गवर्नमेंट सही है कि एलिटिज्म और ओलिगार्की और उस टाइप का सेटअप जो कि काफी पढ़े लिखे हैं लेकिन वो सैंपल रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू ना देते हुए, जैसे इलेक्टोरल कॉलेज का फंडा जो अमेरिका में है, इस तरह के माइंडसेट वाले लोग को अगर लगता है कि एनीथिंग मेजॉरिटेरियन इज रॉन्ग, तो ये तो इस पे हमें बहस करना चाहिए. और वी शुड प्रॉब्ली बी यूजिंग द राइट पीपल टू से ऑल दिस थिंग्स. दैट्स ऑल आई हैव टू से. थैंक्स. So the way the naval base sharing and refueling agreement was signed, that is a concern. I think it is a slight slippery slope. इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. दे हैव टू लुक इनटू इट. One of the shows I was doing 2-3 days ago, I had pointed this out that India should have had its own social media infrastructure by now.
India should have had its own mainstream media infrastructure at a global level by now, in the last 10 years. So this is something that has been a big failure on the part of India, at least in the last 10 years. And इसका हमको भुगतना पड़ेगा outcome, because everything in which you are dependent on a global infrastructure for success, that can be easily subverted in the worst possible time. एंड आई एग्री विथ शरद जी कि अगर इंडिया का नेवल बेस शेयरिंग का जो रिफ्यूलिंग का जो एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन किया है, इंडिया डज हैव ए ब्लू वाटर नेवी. सो इंडिया शुड, एज शरद जी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, India should ask for access to Diego Garcia. India should have asked for access to other parts of Indian Ocean bases, including in Philippines, from the US Navy. एंड इट विल इंश्योर दैट इंडिया के जो ट्रेडिंग राउट्स हैं, जो इंडिया को अपने लिए प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एडवर्सिटीज एज इंडिया सॉ इन 1971, you cannot depend on anybody in the world to protect you. I mean, at that time, because of the Cold War, the Russians came to India's defense, but the Russians were also not able to hold on for too long, and they actually forced Indira Gandhi to go to the negotiation table and concede many things, because they did not want to have India's back for too long. And in today's world, it could be even worse. Yeah. So India ko apna infrastructure should be the, I think Prime Minister Modi understands this. The people in India have to understand this, because the Prime Minister can only make policies and only make efforts. The billionaires of India, as sometimes UDG points out, may not be at the same level of geostrategic awareness as they should be. They should focus on these infrastructural developments. They should focus on making India Atmanirbhar in the critical spaces. Or wahan pe, in my understanding, I'm not an expert on all of these things, but in my understanding, India lacks. And that's where we should be heading. एक मेरा रिक्वेस्ट होगा इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स को और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी, कि यहाँ पे जो लोग चैनल पे आए हुए हैं, वी आर ऑल द व्यू मेकर्स एंड ऑन द ग्राउंड वर्कर्स फॉर द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूएस. तो हम लोगों से भी मिला करें, क्योंकि हम आपके प्रोमिनेंट लिस्ट पे नहीं होंगे, लेकिन वी आर द पीपल हु वर्क ऑन द ग्राउंड. वी आर ऑथर्स, वी आर द वंस हु आर ओपिनियन मेकर्स, एंड वी आर द वन हु डू इंडिपेंडेंट एनालिसिस. तो जयपुर डायलॉग्स, हिंदू एक्शन, शरद मोहन जी, देश कपूर, अगर आप में से कोई भी देख रहा हो, मतलब आप इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, हम लोग को से जरूर मिला करें कभी ना कभी. And we are, we are the street fighters. We are the street fighters. We are the street fighters, and we are the people who have lived in the US long enough to at the prominent positions, not just to understand the American psyche and American way of life. तो हम लोगों से मिले, व्यू पॉइंट जरूर ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ मिलते हुए लोगों को जिनके पास who are the people who have access. हम लोग के पास एक्सेस नहीं है और हमारे पास समय भी नहीं एक्सेस होने की. So this is my request to people who are watching from the Indian External Affairs Ministry as well as the Indian Embassy in USA. With that, and beautiful ending, Sadhji. I just add for the NRI diaspora and all the people who are watching, please get active, get engaged in the communities that we live in. It's very important for us. If we are not engaged, we are left behind. Everybody must ask this question to Pramila Jaipal. What was your game plan? and Utsav ji के लिए special commendation from all of us. He did what we all did not do, but we all were there in the events. Actually, thank you. Yeah. Our Indian Americans are united. जो लोग बोलते हैं united नहीं है, हम लोग सब united हैं. And we are in this show also. We are represented from multiple parts and multiple organizations also. Or I did take everybody's comments also. So thank you for liking, sharing, subscribing. And the panelists stay back after the video is live is stopped. So thank you all very much for joining the show today. And namaste. हम लोग अगले संडे को फिर मिलेंगे live show में. Only Sundays we have live shows. Thank you. Thank you.